I can give you 6 or 8 weeks, but why this gentleman had to come? This collector did not inform him. कब कितने दिन बाद में पेमेंट करिएगा इनको? हुजूर ये पूरा अरे भाई दिक्कत नहीं होगा, अब आप करिए ना, दिक्कत क्या होगा कि हम थोड़े ठेका लिए हैं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक लॉ पॉइंट में। तो चलिए आज फिर से एक नई कोर्ट प्रोसीडिंग वीडियो देखते हैं और कुछ नई कानूनी जानकारी सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कानून की जानकारी रहेगी तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और अभी के समय में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है जो पर्सनल अपीयरेंस हो गया? और इसमें पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन का मामला था, और इसमें हुजूर का पिछला ऑर्डर था 18/10/2022 का कि अगर कॉम्पनसेशन पेमेंट नहीं करते हैं तो एक वन लास्ट चांस इज गिवन टू द कलेक्टर सुपौल एंड द कमांडेंट सीमा सशस्त्र बल 18th बटालियन to pay compensation to the petitioner within a period of 6 weeks from today, failing which they will appear personally in the court on the next date of hearing. पेमेंट भी डन? नहीं उस My lords, allow me to. There's a counter affidavit. Yesterday I talked to the district magistrate. Now there are two important facts, man. One is that yes, we have admitted that payment has to be made, and we'll do that payment. Now the entire process takes some time, my lord. 6 weeks time, because I can give you 6 or 8 weeks, but why this gentleman had to come? This collector did not inform him. कलेक्टर को हम कलेक्टर के लिए सॉरी इधर नहीं, collector yesterday collector sent me the instructions, but anyway collector talked to me yesterday and I said okay, what he told me, what he has communicated, I say I'll communicate it to my lords, and still if my lord is of the view, because that okay, the collector has to come, he'll come tomorrow, day after tomorrow. I'm not calling him. But let me then explain why. My lords, in this case there are 3 steps for land acquisition proceedings to happen. One is the SIA, we have exempted it, so there won't be any SIA in this as far as this particular case is concerned. Now there has to be a preliminary notification, and then there has to be a declaration. These two are very important aspects. I understand. I will grant you time. That is why but the collector should have informed this commandant that we are taking steps. There is no need of going to High Court. ये वाली बात कलेक्टर साहब से हमारी नहीं हुई। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, कलेक्टर साहब बोले कि हम आ जाते हैं, ये बातें हैं। हमने कहा कब कितने दिन बाद में पेमेंट करिएगा इनको? हुजूर ये पूरा स्टेप्स आप बोलिए ना एक ही बार। 6 महीना हमने एडमिट कर लिया है कि हम लोग करेंगे। ये हम पैराग्राफ पढ़ दे रहे हैं। The Learned Counsel for पैराग्राफ 9 हम एडमिट कर लिया है कि पैरा 9 of counter affidavit reads as follows. Counter affidavit of the state reads as follows. पैराग्राफ 8 and 9 both में भी 8 and 9 read as follows. In view of the undertaking of the collector, this application is disposed of with a direction to pay the compensation amount to the petitioner within 6 months. Next. ऊपर में कर दीजिएगा. The collector ought to have informed the Union of India and the Commandant SSB about filing of the counter affidavit, and if the amount was being paid by the state, there was no need of the I'm sorry, there is one thing. But all this to happen, first there has to be a requisition by the requisitioning authority. That happens to be the SSB through the MHA. We have written letters, so now it's up to him. The moment he issues that requisition, we'll initiate that process. Who will issue it from MHA? My lords. Who will issue it from MHA? The man who's here. we have already during the course of the acquisition proceeding, we have in acquisition proceeding is complete, we have made payment of entire amount as demanded by the DLO to the office of DLO. This is getting confusing, my lords. Now this was a special case. I will tell you. Heard the parties, the pursuant to the last order, the commandant SSB Supaul is Supaul na hai? Yes, sir. Birpur Supaul.
Vipur Supal is personally present. Just paragraph 7 may kindly be taken note of, 7, 8, 9, that is all. His appearance, personal appearance is dispensed with. The copy of the counter affidavit be served upon the learned counsel for the Union of India, and he will act, the Union of India will send a fresh requisition for acquisition, and thereafter the collector will एक मिनट रुकिए, collector will take all steps for payment of the compensation amount to the petitioner. The state is granted 6 months time for payment after the requisition is made by the Union of India. We have issued a letter to the SSB, just hold on sir, आप देखा नहीं हम दे देंगे. We have issued a letter on 1811. The only request, because this is a special case my lords, there was some fault that has happened, that is why we are exempting the SIA. We are not doing anything, we are just saying that the minimum possible shortest time. So all he has to do is, we have issued him a letter, so let him reply to that letter. That is क्या दिक्कत है आपको यूनियन? पहले तो काउंटर एफिडेविट की कॉपी दें कि हम भी कुछ कह सकें. जब इन्होंने काउंटर की कॉपी अभी तक सर्व नहीं किया तो हम कैसे सबमिट करें कुछ भी? हुजूर मेरा सबमिशन है जो एक टाइम दे दिया जाए, कलेक्टर साहब भी फाइल कर दें, वो भी कि क्या है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होगा तो हुजूर का डायरेक्शन होगा, फिर नहीं मिल पाएगा. इसीलिए टाइम देखिए, दैट इज व्हाई आई वाज सबमिटिंग माय लॉर्ड्स की प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, ताकि इनको भी बाद में परेशानी नहीं हो कलर, बिकॉज कोई ऑफिसर 15 साल बाद आएगा. Counter affidavit filed by the state is taken on record. The learned counsel for the state will serve a copy of the counter affidavit to the counsel for the Union of India. Next, pursuant to last order, the commandant SSB has appeared. His personal appearance is dispensed with. List this case after 4 weeks. In the meantime, the Union of India will file its affidavit pursuant to the counter affidavit of the state. But in the meanwhile, the Union of India will take all steps pursuant to the letter dated my lords, just. और इस 4 हफ्ते को हुजूर 1 हफ्ता कर दिया जाए, बट उसके कंप्लायंस पे कोई भी स्टेप हमारे लिए 18/11/2022 written by the collector to the commandant SSB battalion 18/45th battalion Birpur. इसमें हुजूर दिक्कत क्या होगा? एक बार इन्होंने 2006 जो, अरे भाई दिक्कत नहीं होगा, अब आप चिट करिए ना, दिक्कत क्या होगा कि हम थोड़े ठेका लिए हैं. वो पॉइंट वहां पे हुजूर नहीं है. ये जो अगर ये फिर से रिक्वेजिशन करेंगे तो फिर से एक डिमांड रेस करेंगे कि अब आप इतना रुपए और दीजिए. अब दिक्कत, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम. You to tackle it with the state government, whether they will raise the demand twice, thrice, 4 times. They have already taken twice. They have raised the demand, and we have just. So MHA is not powerful enough to recover their amount, or tell them that we have already parted with the amount. This is a very hypothetical question. Ki we will raise the demand. I mean, we don't know. You issue. Who is instructing you? Who is instructing you? MHA is instructing you. Which officer? We have just received from Seema Sasasrabal, your lordship. We are. No. Which officer of SSB? You are saying SSB. I am asking you which officer of MHA. Then you are saying Seema Sasasrabal. We are appearing on behalf of both the parties, and affidavit is being executed by the Seema Sasasrabal. I am interested in knowing who is giving instructions from MHA. None. Because then how do you argue these things? How did you argue these things? Because you are arguing hypothetically that this may happen, this may happen. Government agencies, when they are
interacting, writing letters, how can you say that this will happen, this will happen? If they say that send fresh money, then you can say that no, the money has already been released in favor of the state of Bihar. That is why, Your Lordship, I am just submitting. So you tackle with the collector, you interact with the collector. आप फोन करिए, मीटिंग करिए. अब इसके लिए 4 हफ्ता तो दिए ना आपको हम. ठीक है. 4 हफ्ता बाद हम आपका फाइनल टाइम देंगे. मेरा एक ही सबमिशन है जो रिटेनिंग पोजीशन, क्योंकि 10 साल पहले एक्वायर किए हैं. हुजूर का ऑर्डर हुआ 10 साल 12 में दे चुके हैं. 10 साल हो गया, अभी लोग अभी तक ये लोग फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं. आप रिटेनिंग इट्स पोजीशन नहीं, जिस दिन लिस्ट पर आएगा जी आप 10:30 बजे मेंशन करेंगे, हम टेकअप कर लेंगे. जी ठीक. मतलब we have made our stand very clear. That was we'll pay him that money. मतलब इसमें अब तो since we are making it very clear before my lords, it's an undertaking given by. Now it is clear that he is going to get the amount. Going to get the amount. हम लोगों ये 6 months time इसलिए कि so that in future कभी कोई ऑफिसर आया, कभी कोई बोला कि साहब कैसे पैसे दे दिया, आपने प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किया, तो पता चला कि ये तो चले गए, हम चले गए, अब वो दूसरे से रिकवरी का और एक अलग तमाशा हो रहा है. उसमें जो रिटेनिंग इसलिए करेंगे, अगर हुजूर का बेंच रहता तो ठीक है, नहीं तो लैंड एक्विजिशन का मैटर आता ही नहीं है. हुजूर 10 साल से हम सफर कर रहे हैं हुजूर ऑलरेडी. 10:30 ऑब्लाइस आपको मेंशन करना चाहिए था. इनको बहुत देर से आप बैठाए हुए थे. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन समवन फ्रॉम दी फोर्सेस टू वेट. आगे से वैसा अगर पर्सनल अपीयरेंस रहे तो मेंशन कर दीजिएगा. चलिए, और किसी का कोई अर्जेंट? इस पूरे मामले को देखने के बाद आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए. अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और आपको हर रोज कुछ नई कानूनी दौर पे सिखाने की कोशिश करता हूँ.